Assalamu alaikum, everyone. I wanted to start a watch party for my watch party के ऑप्शन फेसबुक में निकाल दिए. I don't know. पता नहीं. But let me just share my session really quickly and confirm that I have gone live. Yep, we have gone live. Good. Sorry everyone. It is me. I'm moderating this myself. So इसलिए I just am lagging a bit. Okay. Assalamu alaikum everyone. Sorry for that. But Assalamu alaikum everyone. So this session is about technical interview guidelines for SQA. मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी भी उर्दू बोल सकूँ बोल लूँ, but क्योंकि मेरा work जो है वो सारा इंग्लिश से है, तो ऐसे मेरा माइंड जो है वो उसी को करता है, तो ऑटोमेटिकली इट शिफ्ट्स टू इंग्लिश. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इट स्टेज उर्दू बिकॉज आई रियली वांट कि ये सब लोग के लिए अप्रोचेबल हो. सो अ लिटिल बिट अबाउट मी. So मैं currently as a software development engineer in test SDET हूँ at Unity Technologies in their Switch platform team. It's a big it's the world-leading real-time engine development company. जिन्होंने Unity 3D बनाया है and pretty much market leaders हैं for their engine, and 70% of the all games made in the world are being used use Unity to make their games. पहले मैं लाहौर में थी. साल के शुरू में I moved to UK, and professionally, I have 5+ years of experience in SQA, and I have उस 5+ years के अंदर मेरा तकरीबन 4 साल का experience VR के अंदर है, Unity engine में, multiplayer games में, RESTful APIs की testing में, and then 1 year experience in engine SQA in Unity specifically. उसके अलावा I have some additional experience in database management and web development and server-side development. So that's a little bit of a background about me. Moving on, the products I've worked on. So I thought I'd showcase a little bit about myself, okay, what kind of products I've worked on. The last one I worked on, the longest I've worked on is Arthur VR, which is a virtual reality meetings collaboration app for enterprises. Recently, it's got consumer version launched, and and then the other one was a casino VR poker. So that's also a virtual reality multiplayer game. So made pretty much most of my experiences in multiplayer games, and both of these were nominated by F8 conferences and Oculus Connect conferences as one of their leading solutions in VR, which is a very big achievement for Pakistan because both of these games are 100% developed in Pakistan. So yeah, and now I work in the engine side of it. So Casino VR, Arthur VR, दोनों ने Unity engine use किया था as its base foundation, and now I work in that base foundation in Unity. As you can see, that's the editor picture, and yeah. So let's just get started really quickly with the guidelines. But before we get started, I wanted to point out some stuff. Okay, just even before up interview tackle के साथ करते हैं, I really wanted to note down some things जो कि एक SQA का mindset होना चाहिए. A lot of people say कि एक SQA, what is an SQA? It's a very common question, even for fresh grads or people who have worked in an industry for a couple of years. जो juniors होते हैं, they have some questions कि what is an SQA? क्या चीज़ें होंगी? क्या skill set उनका होता क्या है? क्योंकि you're very clear about the SDE path, but आपको SDE path नहीं पता होता, या फिर QA का path आपको ऐसा clear नहीं होता. So I wanted to just jump in on those and share that. So ideal mindset of a QA engineer. So
but hiring managers also are very keen for these kind of mindsets. But I'd say for someone to develop very well in the QA path, that's the kind of mindset that is pretty ideal and would work really beneficial for everyone. So one is that curious and eager to learn new techniques and new technologies and techniques, because QA जो है, they have to be an all encompassing skill set. आपको पूरा product जो है वो आपके अंडर हो जाता है, unless you're working on specific features. Even then you keep jumping between features, so you can have specialities, of course. जैसे मेरी multiplayer की speciality बन जाती है, मेरी game development की speciality बन जाती है, but still you should be eager to learn new techniques, ताकि आप आराम से adjust कर सकें किसी भी नए path के अंदर. You should be technically strong and think like a programmer, which is for no one is asking you to develop anything for a programmer. As a programmer, यानी कि आपका ऐसा नहीं है कि आपको हम कहेंगे कि सर्वर साइड आप पूरा खड़ा करके दे दें हमें, but आपको you should always as an SQA you should always think like a programmer कि हम अगर कोई problem solve करने जा रहे हैं, हमें एक feature develop करना है, तो how am I going to develop that feature? अगर आप उसको इस तरह सोच सकते हैं कि how are you going to develop it, that is the only way you're going to figure out कि अच्छा इसके edge cases क्या हो सकते हैं, इसके boundary cases क्या हो सकते हैं, मैं इसके test cases क्या क्या बना सकते हूँ, कौन कौन से UX issues आ सकते हैं, UI issues आ सकते हैं, server side issues आ सकते हैं, because you're thinking about developing a feature rather than testing a feature of trying to figure out bugs. That's why it says that UX wise intuitive होना चाहिए, क्योंकि UX is a very big part of a QA engineer, जो कि that is one advantage you have over programmers. Programmers UX wise इतने strong नहीं होते, that's why UX designers बिल्कुल different होते हैं. उनको साथ पेयर किया जाता है एक programmer के, but जो QA है, because it's going to be either, and coming back to that, either you specialize in QA, UX QA, आपको ओवरऑल एक इंटुइटिव आपको होना चाहिए कि अच्छा ये बटन जो है, अगर ये स्टार्ट का बटन हो तो ये रेड नहीं होना चाहिए. सो दीज काइंड ऑफ थिंग, दिस इज लाइक वेरी बेसिक थिंग, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, logically analytically strong. QA engineers are, that's why they're engineers. So that's why you have to be logically analytically strong. You need to have good analytical powers, observational powers. You need to be really good with numbers and data sets, and very intuitive with all the workflows and everything. Good time management and prioritization skill. That is again what you have an advantage over the programmers. QA engineers होते हैं वो time management में बहुत अच्छे होते हैं, and prioritization skills में बहुत अच्छे होते हैं. So that's why they can prioritize different bugs very easily. कि उनकी severity क्या है, उनकी priorities क्या हैं, and that's why they make a very good they make a natural path to product management या technical project management. कि after a couple of years अगर वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, उसके अंदर उनका skill set ज़्यादा develop कर जाता है time management में, prioritization skills में, so they easily go towards TPM path. So third one, the last one would be good with communication and a team player. I know ये communication वाली बात हर जगह लिखी जाती है, but it is very very crucial for a QA engineer. I'd like to explain क्यों it's very important. आपकी communication skills, आपने as a QA engineer आपको user से भी बात हो रही होगी, because user से feedback आ रहा होगा या फिर bugs आ रहे होंगे. आपका business side से भी बात हो रही होगी, because business side is going to give you requirements. आपका UI UX से communication हो रही होगी, आपके programmer से communication हो रही होगी कि अब वो bug आ गया, you have to explain to them कि क्या हो रहा है, आपने उसको अब develop करना है. तो वो सारे लोग डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है. प्रोग्रामर्स जिस तरह बात करते हैं वो फुल टेक्निकल लिंगो में बात कर रहे होते हैं. आपका यूजर जो है वो आपको सिंगल लाइन आंसर देता है, और कभी कभी वो गलत आंसर होता है, वो किसी और बारे में बात कर रहा होता है और आप एक्चुअली किसी और की होती है. आपको कहता है मैं ऐप चलाता हूँ, वो क्रैश हो जाती है, या फिर मैं ऐप चलाता हूँ तो स्क्रीन ग्रीन हो जाता है, और आप अगर ऐप में ढूंढना शुरू कर दो कि हमने कहीं पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहे हैं और एग्जैक्टली उसको ट्रांसलेट किस तरह कर सकते हैं. तो द ट्रांसलेशन पावर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्यू engineer, to be able to understand different type of people and then be able to communicate it and translate to other kind of people. That's very very important, and that's why you have to be a team player, because you have to work with a lot of teams, multiple teams. That's generally a rule of thumb, that a QA engineer has to go and talk to people and figure out कि क्या हो रहा है. Must know technical paradigms. Even though you're a QA engineer, but कुछ development architectures हैं as a QA engineer in this modern world, generally speaking, unless आप कोई बहुत ही unique जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं एक unique company में काम कर रही हूँ currently,
it's very very good to know about these things and how to create these things. As a CRUD operations, you should be able to understand कि CRUD operations होते क्या हैं और उनको अप्लाई किस तरह किया जाता है, आप कौन कौन से फंक्शंस यूज करके उनको अप्लाई कर सकते हैं. वेब डेवलपमेंट, इट्स वेरी वेरी इट्स एसेंशियल टू नो कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है और उसके अंदर डिफरेंट स्टैक्स किस तरह के होते हैं, मीन वर्न का स्टैक किस तरह होता है, CRM बेस्ड वेब डेवलपमेंट किस तरह होती है. एक हाई लेवल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. और हाई लेवल मीनिंग के यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जी लाइक आई सेड MVC आर्किटेक्चर, उसके अंदर कौन कौन सी आपकी APIs होती हैं, APIs का स्ट्रक्चर क्या होता है, रेस्टफुल APIs क्या होती हैं, SOAP APIs क्या होती हैं, वेब सर्विसेज क्या होती हैं, HTTP रिस्पॉन्सेज क्या होती हैं. और इसका आपके पास एक बुकिश आंसर नहीं होना चाहिए. यू शुड गो टू ऑल द ट्यूटोरियल्स दैट टीच यू हाउ टू बिल्ड these kind of these kind of architectures, and mean learn ka stack ka aap try to build a website through it, and you don't need to be really really good at it. बट आप बेसिक लेवल का भी अगर आपने एक वेबसाइट बनाई भी होगी ना, तो आप जब उसको QA करने जाएंगे, यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू पिक अप लाइक 50% मोर बग्स देन यू डिड बिफोर, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. इफ यू नो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन API कॉल, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसकी URL किस तरह बनती है, पीछे उसके बैकएंड पे चल क्या रहा है, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ें पिक करना शुरू कर देंगे. आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दिस इज एन API कॉल, इसके अंदर पैरामीटर्स होने चाहिए, व्हाई आरंट दे, क्या हो रहा है यहाँ पर. So yeah, I would recommend to all QA people कि ये ज़रूर आपको इतनी आपकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए. एंड अगेन आप कंपनी वाइज डिफर करता है. अगर आप एक यूनिक कंपनी में काम करें तो आपको उनका स्टैक पता होना चाहिए, एंड यू शुड हैव अ हाई लेवल नॉलेज ऑफ देयर स्टैक. Common skills and tools of use. Development tools and services जो कि normally tools use किए जाते हैं कंपनीज के अंदर. Amazon Web Services, AWS बहुत यूज होता है. Visual Studio, Rider यूज काफ़ी यूज़ होता है. राइडर अब लोगों ने पिक करना शुरू कर दिया. नॉर्मली अभी तक विजुअल स्टूडियो बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड्रॉइड स्टूडियो, यस, जो मोबाइल डेवलपर्स हम एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे होते हैं. गेमिंग स्पेसिफिक ऑब्वियसली आई हैड टू ऐड बिकॉज मैं गेमिंग की हूँ. तो यूनिटी 3D या फिर अनरियल इंजन. पाकिस्तान में अनरियल इंजन की डेवलपमेंट बहुत कम होती है, बट यूनिटी 3D इज़ वेरी डोमिनेंट पाकिस्तान. तो एंड गिट, पाकिस्तान में गिट भी बहुत डोमिनेंट है. बाकी बाहर कंट्रीज में दूसरे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन गिट जो है, गिट क्लाइंट्स एंड गिट सर्विस जो है वो आपकी वर्जन कंट्रोलिंग के लिए बहुत कॉमनली यूज किया जाता है. तो इट्स वेरी गुड टू नो अबाउट दीज थिंग्स एंड वेरी बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ दीज टूल्स कि इनको यूज किस तरह किया जाता है. नॉलेज शेयरिंग के अंदर कॉन्फ्लुएंस, नोशन, आयोड्रा, जी स्वीट, माइक्रोसॉफ्ट 365, इन सब के साथ आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यू ओनली नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 और मैं डॉक्स में सिर्फ काम कर सकती हूँ या फिर मैं वर्ड पैड में सिर्फ काम कर सकती हूँ. यू शुड बी एबल टू स्विच बिटवीन मल्टीपल softwares, and the only way you can build that kind of skill set कि you are able to switch between different softwares is कि आप अपने आप को as much softwares के साथ adapt करना शुरू कर दें जितना possible है. And I added IODraw in this because as a QA engineer you have to make a lot of graphs. Representation बड़ी ज़रूरी होती है, flowcharts बड़े बनाने होते हैं. So अगर आप उस path पे हैं जो कि आपको करना चाहिए, फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए, तो उन फ्लो चार्ट्स के लिए आयोड्रा इज माई गो टू. नाउ रिसेंटली मिरो बोर्ड इज माई गो टू, क्योंकि मिरो बोर्ड इज वे ईजियर देन आयोड्रा. मैं डॉग्स के अंदर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वर्क फ्लो बनाना, तो आई प्रेफर नॉट टू. तो मैं बना के वहाँ से एक्सपोर्ट कर लेती हूँ. कम्युनिकेशन के लिए आई नो आई एडेड दिस बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि QA का, लाइक आई सेड, कम्युनिकेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ अ QA स्किल सेट. सो कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस यू शुड बी एबल टू अडैप्ट बिटवीन. सो द मोस्ट कॉमन वंस पाकिस्तान में जो यूज़ की जाती है वो स्लैग बहुत ओपनली यूज़ किया जाता है फॉर इन कंपनीज. स्काइप अभी तक काफ़ी यूज़ किया जाता है. वेरी सरप्राइज, बट स्काइप अभी तक काफ़ी यूज़ किया जाता है कंपनीज के अंदर बिकॉज आई थिंक इट्स सिक्योर. तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पीपल जस्ट यूज स्काइप. एंड डिस्कॉर्ड, अगेन गेमिंग स्पेसिफिक, गेमिंग कंपनीज स्टिल प्रेफर टू यूज डिस्कॉर्ड. I don't use Discord. I've never used Discord, even though I've been in the gaming industry for more than 5 years. But I know that most companies do prefer Discord servers, gaming specific companies. Next session, next slide. Common skills and tools of use. I want to add this also. Okay, थोड़ा सा technical tools भी मैं इसके अंदर add करूँ.
बग रिपोर्टिंग के लिए जिरा स्टिल प्रीटी डोमिनेंट, बट पाकिस्तान में एक्सेल शीट्स बहुत यूज की जाती हैं. एंड देन ट्रेलो बोर्ड्स आर न्यू थिंग बिकॉज दे आर फ्री. तो ट्रेलो बोर्ड्स के अंदर वो बोर्ड्स होते हैं. इट्स वेरी नाइस टू बी फेमिलियर विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स. ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बग रिपोर्टिंग टूल्स आर यू फेमिलियर विद, आपने कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं. फिर अगर वो आप उनको कहते हैं मैंने जिरा यूज़ किया हुआ है और आपको जिरा का कुछ भी नहीं पता, तो यू शुड ऑलवेज से स्टफ जो कि आपको पता है, इवन तो आपने उसका ट्रायल रन ही क्यों ना लिया हुआ हो. तो अगर तो आपने मैंने जिरा यूज किया हुआ है, और जिरा इज सच अ बिग सिस्टम कि एवरीवन विल बी सरप्राइज कि आपने कौन सी कंपनीज जो जिरा यूज करी थी एंड यू वर यूजिंग जिरा बिकॉज जिरा इज लाइक यूज्ड फॉर एंटरप्राइजेस एंड एवरीथिंग. सो वो इंटरव्यू में थोड़ा सा आपके लिए बैड सिचुएशन है. तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर कोई भी टूल्स इसमें नजर आ रहे हैं जो कि यू वांट टू ऐड टू योर स्किल सेट बट योर कंपनी डजंट यूज इट और यूर फ्रेश ग्रेजुएट, सो गो यूज देयर ट्रायल वर्जन्स and try to implement them in your own personal projects. आपके final year projects होते हैं, normal ये semester projects होते हैं, या फिर आपके अपने personal projects run होते हैं. Use those and then जब आप उसके अंदर successfully use कर लेंगे, then you can add them to your CV and tell in your interview कि मैंने personal capacity में ये use किया हुआ है, मैंने professionally ये use नहीं किया हुआ. तो interviews एकदम से समझ जाएंगे, okay, that's good enough. That shows initiative कि आपने कुछ किया है. Testing tools, ADB platform tools for Android developers, JMeter and Postman for API developers, and Unity Profile for gaming, and Visual Studio Back for normal development. Database administration, database QA का बहुत बड़ा part होता है. It's just intuitive path बन जाता है क्योंकि you have to work with databases, you have to work with data, you have to analyze के exactly हो क्या रहा है. So it's good to have knowledge of MySQL and NoSQL. तो अगर आप उसको सोचेंगे टूल्स वाइज तो MySQL and MongoDB यूजुअली यूज होता है, लेकिन अगर आप रिलेशनल और नॉन रिलेशनल में सोचना शुरू कर देंगे तो यू विल बी फ्री फ्रॉम द टूल एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैंने SQL को हाईलाइट किया हुआ बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस. अगर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, SQL आपको फिर भी आनी चाहिए, लाइक ऐसा, क्योंकि आपको एनालाइज तो करना पड़ेगा, एनालिटिक्स में जाना पड़ेगा आपको, तो डेटाबेस मोस्ट ऑफन आपको यूज करना ही पड़ेगा. सो आई वुड से स्टार्ट विद SQL and then move to a easier scripting language like Python, mean MERN stack या HTML CSS भी आपको जरूर आना चाहिए, considering हर किसी की वेबसाइट होती है, कभी ना कभी काम आ जाता है, तो you should be able to understand basic HTML and CSS. Common panel session topics. So finally we're going to start with the interview guideline part. कि technical interviews के अंदर जो panel sessions होते हैं, technical panel sessions होते हैं, उसके common topics कौन कौन से आते हैं. First one is the bug processing lifecycle. I've created this huge flow chart just to emphasize कि processing lifecycle hota hai. I'm not going to go through the entire workflow, but as you can see, I wanted to add this because of my next slide to compare के दोनों में difference क्या है. Bug processing lifecycle आपका जो panel session होता है उसके अंदर जरूर पूछा जाता है कि what do you know about a bug processing lifecycle. Normal question हो सकता है इस तरह, normal question कहेंगे आपके पास एक bug आया, आप उसको किस तरह process करोगे, या फिर आपके पास एक bug आया, आपने आगे क्या करना है, तो इस तरह के question आएंगे कि आगे क्या करना है. तो that means that you need to explain the life cycle. So you should be able to go through the entire one. आप obviously आप उसके अंदर ये lead QA reviews वाला bug अगर आप step miss भी करते तो that's completely fine, but you should be able to say कि हम जब bug report आता है we set it to new, and then आप उसमें से थोड़ी सी check करते हैं कि वो वैलिड इशू है भी कि नहीं, स्कोप में है भी कि नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं है, एंड देन वो असाइन हो जाता है, इस सारे चेक्स के बाद असाइन हो जाता है डेव को, एंड देन वो वापस आता है, फिर वो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आता है, एंड देन वी वेरीफाई. अगर वो सही है तो इट्स गेट वेरीफाइड एंड क्लोज, एंड अगर नहीं है तो इट गेट्स रीओपन एंड रीअसाइन टू द डेव जिसने फिक्स किया है. नेक्स्ट इज अ टेस्टिंग साइकिल एंड फीचर डेवलपमेंट. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन जो कि आपका bug processing life cycle था. Different in the sense कि feature development and bug processing are two different streams जो कि generally SQAs को use करनी जो जनरल वर्क ऑफ स्ट्रीम्स होती है SQA की, वो ये बनती है, या तो बग प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं या फिर वो फीचर डेवलपमेंट में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं. तो बग प्रोसेस होता है आपके पास टिकट्स आ रहे हैं, हमने टिकट्स वेरीफाई करने. फीचर डेवलपमेंट होती है आपके पास एक पूरा फीचर आया है, जैसे हमने लॉग इन इम्प्लीमेंट करना है किसी वेबसाइट के अंदर. अब वो लॉग इन इम्प्लीमेंट होगा एक डेवलपर के साथ और एक SQA के साथ, वो दोनों मिलके करेंगे. अब यू शुड बी एबल टू से कि अगर मेरे पास एक फीचर आया है डेवलपमेंट के लिए, अब मैंने क्या करना है. इसके अंदर ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि जी आपने
SQA को कब पार्ट लेना चाहिए डेवलपमेंट के अंदर. दैट व्हेन दे से दैट मीन्स कि वो फीचर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या फिर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं. इसके अंदर आपका, as you can see the chart, it says requirement analysis, test plan creation, test case execution, defect logging, or defect re-verification, and then it just keeps going through different iterations of this. Not just necessarily requirement analysis, but कभी कभी इसमें भी आप वापस आ जाते हैं considering अगर आपका फीचर कुछ ज़्यादा ही अपडेट हो गया है और आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस की दोबारा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की दोबारा ज़रूरत है. सो या रीडिंग अप ऑन दैट. एंड अगर आपने फीचर डेवलपमेंट का भी काम नहीं किया, आप सर्विसेज में काम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको टिकट वेरिफिकेशन करनी है, एंड नाउ यू वांट टू मूव इनटू अ पोजीशन जो कि फीचर डेवलपमेंट करती हो, नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू वरी अबाउट इट. अगेन what you can do is कि अपना पर्सनल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें. पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर ये टेस्टिंग लाइफ साइकिल्स आप इम्प्लीमेंट कर लें. Add in features but not randomly go through the whole steps of these things. Like वही बात है, एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें, उसके अंदर एक लॉगिन का पेज आना है, बेसिक थीम है, लेकिन go through these steps one by one. कि मैंने रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहले करना है, फिर मैंने टेस्ट प्लान क्रिएशन करनी है, साथ मैंने अपने फीचर की डॉक क्रिएट करना है, फिर टेस्ट केस क्रिएशन करनी है अगर टेस्ट केस की ज़रूरत है. अगर ऑटोमेशन के लिए ज़रूरत है तो हम ऑटोमेशन की टेस्ट केसेस क्रिएट कर लेंगे, वरना मैनुअल के कर लेंगे. फिर हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे जब वो फीचर डेवलप हो जाएगा. ब्रांच वेरिफिकेशन करेंगे. आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, यूज गिट. इवन आप, अगर आपका एक छोटा सा एक सिंगल HTML पेज है ना, वर्जन कंट्रोल करें, उसको गिट के ऊपर होस्ट करें. गिट फ्री होस्टिंग देता है आपको. और go through the whole commit process, go through the whole branching process. कि development हो रही तो personal branch में हो रही है, main development branch जो है वो वहीं पर ही है, and it's gonna stay there. इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं और इससे आपको एक आइडिया रिफाइन हो जाता है कि फीचर डेवलपमेंट एग्जैक्टली होती क्या है. नेक्स्ट, टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड बग रिपोर्ट. आई मेड दिस टू divs बिकॉज टेस्ट डॉक्यूमेंट बग रिपोर्ट के बारे में भी क्वेश्चन जरूर आते हैं कि आपको एक अच्छी बग रिपोर्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, व्हाट डज इट लुक लाइक. और फिर ये भी पूछा जाता है कि एक अच्छा टेस्ट डॉक्यूमेंट के attributes क्या होते हैं, what does that look like. Difference between a test document and a bug report is कि bug report एक कोई बग लॉग होता है तो उसके लिए बनाई जाती है, उसका बग रिपोर्ट होती है, स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ऑल दैट स्टफ. टेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है. जब आप एक फीचर बनाते हैं तो आप उसके लिए एक टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसके अंदर आप उसका, एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड इट सेज कि एक उसके अंदर आप QA का नेम भी डालते हैं, आप डेवलपर का नेम डालते हैं, आप उसकी PR रीपो बिल्ड या फिर चेंज सेट उसका लॉग लिख देते हैं, आप उसके ओवरऑल टेस्ट स्टेटस रखते हैं, टेस्ट लेवल्स कवर्ड, कौन कौन से लेवल्स कवर्ड हैं, यानी कि ऑटोमेशन इसके अंदर अप्लाइड होगी, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होगी, इसके अंदर इंटीग्रेशन टेस्ट होंगे, यूजेबिलिटी टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे. इस तरह की चीज़ें आप जो है वो 7 to 8 लेवल्स जनरली डिफाइन किए जाते हैं. तो यू कैन जस्ट से ऑन दैट डॉक कि इस फीचर के लिए कौन कौन से लेवल्स अप्लाइड हैं और कौन कौन से नहीं. हो सकता है ऑटोमेशन ना हो, कुछ फीचर्स होते हैं इस तरह, जैसे VR के अंदर तो ऑटोमेशन इज अ नाइटमेयर, यू कैंट ऑटोमेट इट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके अंदर फिर वो लेवल हमेशा नो रहेगा. सो टेस्ट केसेस, फिर आप नीचे जाते हैं, सारे टेस्ट केसेस आप एग्जॉस्टिवली लिखते हैं. इन कंपैरिजन टू दैट, a bug report just has one test case because it's a bug report for just one bug, so it would have just one steps of reproduction. Test document would have multiple test cases exhaustively listed with all of their steps of reproduction and all of their screenshots, reference material added to it, ताकि आप उसको बाद में उसकी तरफ वापस जा सकें. टेस्ट डॉक्यूमेंट्स आप अगर आप एक पूरे फीचर के बग रिपोर्टिंग बना रहे हैं, यानी कि आपको एक फीचर है, मैंने लॉगिन करना, लॉगिन के 10 बग्स आए हैं और आपको डेवलपर के साथ काम करने की जरूरत नहीं, तब भी टेस्ट डॉक्यूमेंट बन जाता है क्योंकि आपके पास 10 केसेस हैं, वो एक चंक है, एंड दे कैन बी पाइल्ड अप इनटू वन डॉक्यूमेंट क्योंकि उनके अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट लॉगिन का है, वो एक ही फीचर के इतने सारे बग्स हैं. तो और आपको एक ही अपने मैनेजर को ये सारे एक साथ ही रिपोर्ट करने होंगे, तो फिर आप उसके लिए टेस्ट डॉक्यूमेंट बना लोगे बिकॉज इट्स ईजियर. अदरवाइज ट्रैकिंग के लिए इट्स डिफिकल्ट. मैनेजर को आप क्या बताओगे कि टेस्ट 10 मैंने कर लिए हैं, वो सारे URLs हैं, आप जाके चेक कर लें. तो it's test documents are very good. I haven't added any samples to it because मेरी सारी वो, मेरे पास टाइम नहीं था कि सैम्पल मैं बना सकूँ. मेरी करंट जो थोड़ी सी NDA specific है, so I can show you a good test document, but yeah, Google it and figure it out. Like Google test documents and you'll see the difference between a bug report and a test document.
Common questions. I know that's a lot of text on the slide here, and it may not be so readable. So I'm going to share my entire slide deck on this Get Hired Slack channel, and वहाँ से आप लोग जो है वो, if anyone wants to go through it, they can go through them together. But I'll go through a few of them. When should a QA's work start in feature development? ये हम इसके ऊपर we've already gone through this. How to reproduce a one-liner bug coming from user end. ये बहुत important होता है, और इससे आपका जो है ना, इस सवाल के जवाब से आपकी सीनियरिटी जो है वो चेक हो जाती है कि आपका क्यूए की अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आपका लेवल कितना है एज ए क्यूए इंजीनियर, आपका लेवल कितना है स्किल सेट के अंदर. सो फॉर मी पर्सनली व्हेन आई हायर पीपल, आई डोंट रियली सी numbers of experience. I go through these questions and then I judge के अच्छा what kind of skill set would be, what kind of level would they adjust it. Because काफ़ी लोग होते हैं वो 5-6 साल से 5-6 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हम उनको फीचर डेवलपमेंट के अंदर उनको ऐड नहीं कर सकते, हम उनको एज ए मैनुअल टेस्टर ऐड कर सकते हैं. तो इफ दे वांट टू स्विच टू प्रॉपर फीचर डेवलपमेंट या फिर क्यूए इंजीनियरिंग, मिड लेवल इंजीनियर में जाना चाहते हैं, तो they still would have to work on their skill set. तो they would have to come up with all of these answers. So we suggest कि अच्छा आप इस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ जूनियर लेवल पर आ सकते हैं, and then we'll groom you, we'll teach you, and then you can go through your path of a QA engineer. I hope that makes sense. But yeah, how to reproduce a one-liner bug coming from a user, and it's very common. It happens a lot, especially अगर आप feature development कर रहे हैं, अगर आप एक product पे काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में increasingly जो है ये trend, which I really love के होता जा रहा है. A lot of companies work on feature development now, या their own personal products. तो उसके अंदर बहुत होता है कि एक user है, वो कहता है, एक मैसेज आपके फॉरम पे आता है, ये मेरे साथ हो रहा है, और वो एक लाइन का होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. वो हाई प्रायोरिटी बग होता है, क्योंकि उससे आपका ऐप क्रैश कर रही होती है. Whenever it crashes, it's a high priority bug and you have to resolve it. As a QA engineer, you're the first line of defense, and वो बग आपके पास आएगा, and you need to figure out कि डेवलपर के पास वो बग तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पता नहीं चल जाते. इवन टिल 80% आप फिगर आउट नहीं कर रहे स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड डेवलपर के पास नहीं जाता. 80% के बाद यू कैन से ओके, आई हैव अ जनरल आइडिया ऑफ दिस, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द यूजर टॉकिंग अबाउट, एंड here you go. Now you can go ahead and find कि कौन सी लाइन में कौन सा फंक्शन इस वक्त एक्सेप्शन दे रहा है, and you can fix that exception. You don't have to necessarily go to that depth, but you should be able to tell him कि यार ये फीचर है जिसके ऊपर एक्सेप्शन आ रही है. That's the bare minimum you should be able to do as a senior QA. As a junior QA, you can just simply say कि ये फीचर जो है आप ये स्टेप्स करें तो वो ऐप क्रैश कर जाती है. Then you can easily hand it off. So it really depends what kind of the answer you give to this question will set your level of understanding of an SQA. What is an API call? Can you explain its structure? बहुत common है. Technical questions में ये बहुत आता है. API call बताएं, क्योंकि API calls ही अब आती हैं. Normal कोई बहुत rare बहुत बड़ी companies होती हैं, बहुत rare companies होती हैं जो कि अपना server खड़ा करके बैठी हुई होती हैं. जैसे multiplayer में हम अपना server करते हैं, लेकिन तब भी we would want to include cloud computing. तो जब भी cloud computing आती है, आप API calls पे चले जाते हैं. So even with a multiplayer game like us, which had a dedicated server, we still had API calls running as much as possible. We did our image processing there, we did our data calculations there, data collections there, we did our basic authentication, token verification, all of that in API calls. तो ये क्वेश्चन लाजमी होता है. MVC आर्किटेक्चर, क्योंकि API calls MVC आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके बनाई जाती है. So if you can answer what an API call looks like, then you should be able to answer what an MVC architecture is, or you can give a vague answer to this, or not a vague but a high level answer to this. CRUD calls के बारे में अक्सर पूछा जाता है. Depends कि अगर आप lead position पे तो CRUD maybe ना पूछा जाए, but yeah. What else should we go through? Is testing done at the time of a release different from when a feature is developed? Yes, ये question भी काफी होता है. इससे understanding होती है कि आपको workflows की कितनी understanding है overall, कि if you say कि feature development में वही testing हो रही होती है जो release different release के वक्त हो रही होती है, तो that's a wrong answer, because release के ऊपर release acceptance test होता है, rats run होते हैं, तो वो checklist ही different होती है completely. हो सकता है आप जो feature develop करके आप उसको release करने जा रहे हैं, हो सकता है हम release के ऊपर उस feature के बारे में सिर्फ एक test run करें, rather than in comparison आपने जो पिछला
2 महीने लगा के उसके ऊपर तकरीबन 50 टेस्ट रन कर चुके हैं, हो सकता है हम वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम अब रिलीज पे जा रहे हैं. वी हैव कॉन्फिडेंस कि यू हैव टेस्टेड द फीचर डेवलपमेंट फीचर कंप्लीटली. वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर रिलीज चेकलिस्ट, जो कि बे मिनिमम होता है कि ये चीज़ें तो उसकी रन होनी चाहिए ना, क्योंकि रिलीज इज क्लोजर टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग देन फीचर टेस्टिंग. तो इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कंसाइज पार्ट होता है, ताकि एक सेन बिल्ड जितनी जल्दी हो सकता है आप डोर के थ्रू करें. I wanted to add this as a feature use case because I've heard from a lot of people कि feature development इतनी ज़्यादा common नहीं है, and it's जब भी लोग जो है वो जब feature development की बात आती है तो they start giving wrong answers. They don't have an idea कि उसको tackle किस तरह करते हैं. So I wanted to go through one feature test with in our session here. So this one is the API call. A simple API call looks like this. uh, oops, a simple API call looks like this: samplesite.com /user /xyz123abc. आप as a feature, as a QA for a feature, what you start here is ऐसा नहीं है कि आप ये URL पकड़ के इसको हिट करना शुरू कर दें, पोस्टमैन में डाल दें और इसको हिट करना शुरू कर दें. नहीं नहीं नहीं, that's not how you feature test it. You start from the very end and you figure out कि ये review design functionality and requirement of the call बनाई ही क्यों गई थी, इसका design part क्या है, design में you think ये तो URL है, इसका डिजाइन क्या होगा, बट yeah, there's a design /users /xyz123abc. अब ये डिजाइन है, यहाँ पे यूजर्स की जगह वहां भी लिखा हो सकता था, बट ये यहाँ पे यूजर्स लिखा है, क्यों लिखा हुआ है, इज देयर अ नीड फॉर दैट. सो ये सारी चीजें जो है वो आपको ये डिजाइन पार्ट में आ जाती है. फंक्शनैलिटी क्या, इसकी जरूरत भी है, हमने करना भी है, हम इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, आर वी, ऐसा तो नहीं है कि यूजर्स पहले भी एक कॉल थी, अब ये जो है वो बिल्कुल सेपरेट इंप्लीमेंटेड एक और कॉल बनाने जा रहे हैं, डू वी इवन नीड दिस. एंड देन यू प्लान एंड लिस्ट डाउन ऑल पॉसिबल टेस्ट केसेस फॉर इट. जब आपको पता चल जाएगा कि डिजाइन क्या है, इसका यूज क्या है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस टू लिस्ट डाउन ऑल टेस्ट केसेस. एंड देन आप व्हाइल इट इज बीइंग डेवलप्ड, ये सब कुछ हम डेवलपमेंट से पहले कर रहे थे, अपने डेवलपर के साथ बैठ के सेम टेबल पे बैठ के उनसे पूछ रहे थे कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट आर वी डेवलपिंग, व्हाई आर वी डेवलपिंग इट. अ डेवलपर, अ टीपीएम एंड यू, इट मेक्स अ ट्रायंगल, एंड दैट्स हाउ यू डिसाइड कि ये क्या क्या करना है. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, आप जब वाइल इट इज बीइंग डेवलप्ड, आप अपनी तरफ जो है वो आपने टेस्ट लिस्ट डाउन कर लिए, एंड देन यू सेटअप योर एनवायरनमेंट फॉर टेस्टिंग. मे बी आपने पोस्टमैन सेटअप करना है, मे बी आपने जे मीटर सेटअप करना है, मे बी आपने सैम्पल टेस्ट केसेस, सैम्पल डाटा बनाना है फीड करने के लिए अपने टेस्ट केसेस को, कुछ और करना है, मे बी अपने सैम्पल होस्ट सर्वर होस्ट करना है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें. यू डू दैट, एंड देन जब आपके पास फर्स्ट रन आता है टेस्ट का, तो वो टेस्ट ब्रांच डेवलपर ब्रांच होती है. डेव ब्रांच के ऊपर जाके आप उसकी बेसिक फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं और अपने टेस्ट केसेस रन करते हैं. एंड मोर ऑफन देन नॉट आपके पहले 2 टेस्ट केसेस में वो फेल हो जाता है, एंड दिस गोज बैक टू द डेवलपर. एंड दिस पार्ट जस्ट कीप्स लूपिंग फॉर अ व्हाइल. आप ये करते रहते हैं. व्हेन इट्स फाइनली डन एंड यू आर गुड टू गो कि मेरे सारे टेस्ट केसेस ग्रीन लाइट हो गए हैं, दिस फीचर इज गुड टू गो, आप अभी भी मर्ज में नहीं डालते, आप इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब डेव ब्रांच जो है वो अपनी मेन ट्रंक ब्रांच के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है. तो आप रादर देन के वहां जाके टेस्टिंग करें ट्रंक ब्रांच के अंदर या डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर, आप ट्रंक या डेवलपमेंट का पुल लेते हैं अपने लोकल मशीन के ऊपर, डेव ब्रांच के ऊपर, एंड देन आप इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन टेस्ट रन करते हैं, एंड यू रन द होल, यू चेक द होल एप्लीकेशन के आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस फीचर इनटू आवर मेन एप्लीकेशन. वो हमारी मेन एप्लीकेशन तो नहीं ब्रेक कर जाती, इसके अंदर आपके टेस्ट केसेस रन नहीं होते, इसके अंदर आपका लाइक आई सेड अ मोर एक्सपेंडेड रैट टेस्ट रन किया जाता है, रिलीज एक्सेप्टेंस टेस्ट रन होते हैं. एंड देन आप you move on regressively test functionality of application with respect to API call. एंड देन आई थिंक यहाँ पे जाके यू आर गुड टू गो. अगर वो इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो गई है, यू आर गुड टू गो टू add that merge that to your master trunk branch या development branch, master branch. एंड देन उसके बाद आप उसको जो है रिग्रेसिवली टेस्ट करना शुरू करते हैं, या फिर आप ये पहले भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि वो कितना सेंसिटिव फीचर है, या फिर कितना सेंसिटिव फीचर है, कितना उसने ब्रेकेज करनी है. तो आप उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, वरना आप उसे मर्ज करने के बाद करते हैं. फिर आप उसके ऊपर लोड टेस्ट रन करते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंसेज रन करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम्स चेक करते हैं. फॉर एन एपीआई कॉल दीज टेस्ट केसेस आर वेरी रेलेवेंट. आप उसके ये सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, एंड देन आप उसको स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, एंड देन वेयर ऑल इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, इट इज रेडी टू बी रिलीज्ड.
तो आप डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन योर लाइफ साइकिल ऑफ एन एपीआई कॉल is complete. So as you can see, it gets completed right along its development life cycle. So वो hand in hand चल रहे होते हैं. I hope that was helpful and that gave an overview of how you develop a feature with a developer or a programmer. And I hope it help you understand a couple of different techniques for testing. There's integration, load, performance, and stress, and all that stuff. Common technical test scenarios. ये एक मिस्ट्री थी मेरे लिए भी until a couple of years के टेस्ट क्यूए के टेस्ट टेक्निकल टेस्ट होता क्या है, क्योंकि प्रोग्रामिंग का टेक्निकल टेस्ट तो सबको पता है कि क्या होता है. क्यूए का टेक्निकल टेस्ट क्या होता है? क्यूए का टेक्निकल टेस्ट, लेट्स गेट ऑन इट्स a couple of types का टेक्निकल टेस्ट होता है कि प्रोग्रामिंग का तो सिंपल आपको एल्गोरिथम्स करा देते हैं. क्यूए के लिए 2-3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं. First type is a very basic one जो कि junior to mid level QA engineers को दिया जाता है या testers को दिया जाता है, is that कि वो आपको एक ऐप दे देते हैं, आपको एक गिवन टाइम फ्रेम देते हैं और उसके अंदर आपसे कहते हैं जितने बग्स आप पिक कर सकते हैं वो कर लें. तो जितने आप बग्स पिक करते हैं, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ बग्स यू पिक बट द टाइप ऑफ बग्स यू पिक, इट टेल्स यू कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ एन इंजीनियर द कैंडिडेट इज. कि अगर आपने सिर्फ यूआई यूएक्स के मोस्ट बग्स पकड़े हैं, इसका मतलब है कि यू आर गुड एट यूआई यूएक्स, बट मे बी अगर आपने उसकी फंक्शनैलिटी के पकड़ना शुरू करें तो मे बी देख सके उसकी थोड़ा सा माइंड जो है वो इसकी डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहा है, मेन बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है. अगर आप क्लाइंट फेसिंग बग्स पकड़ रहे हैं, आप सर्वर फेसिंग बग्स पकड़ रहे हैं, तो दैट वुड जस्ट शो द हायरिंग मैनेजर कि अब जो क्यूए इंजीनियर आ रहा है उसकी स्पेशलिटी किस तरफ लीन कर रही है. तो दैट्स अ वेरी कॉमन वन जो कि काफ़ी लोगों को मिलता है. The other one is कि it depends कि आप किस किस्म की जॉब के पास की तरफ जा रहे हैं, किस किस्म की जॉब डिस्क्रिप्शन है. बट देयर आर टाइम्स जब आपको कोडिंग एक्सरसाइज भी कराई जाती हैं. ये कोडिंग एक्सरसाइज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द काइंड ऑफ जॉब यू हैव. तो मैंने अपने करियर में एसक्यूएल की बहुत दी हुई है. मैंने अपने करियर में एल्गोरिथम्स की एक दो दी हैं, ज़्यादा नहीं दी. और जो मैंने अभी मेरी लास्ट जॉब थी यूनिटी की, उन लोगों ने मुझसे एल्गोरिथम बिल्कुल भी नहीं कराया क्योंकि इट वाज यूनिटी. दे आस्क्ड फॉर अ गेम, दे मेड मी मेक अ गेम विद इन एन आवर उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, कि वो जो मुझे डिस्क्रिप्शन देंगे आई हैव टू गो थ्रू दो स्टेप्स एंड नथिंग एल्स. सो द कोडिंग एक्सरसाइजेस डिफर फ्रॉम company to company and job description to job description. So I would recommend कि जब भी आपका इस तरह की situation आए, first of all hiring managers will tell you beforehand कि हम अब टेस्ट लेने जा रहे हैं, टेक्निकल टेस्ट आ रहा है, and then you should go and read the job description और company की अपना उनका पोर्टफोलियो कि वो करते क्या है exactly, to figure out कि आपका टेक्निकल टेस्ट होगा वो किस टाइप का होगा. You can just ask very directly, what kind of test are you going to give me? Or is it going to be SQL heavy? Is it going to be scripting heavy, algorithm heavy? Is it going to be something else, automation heavy? You can ask and they will tell you. The next type is a system architecture design. So this is very specific to lead positions. जब जितनी भी क्यूए की लीड पोजीशंस होती हैं उनको ये टेस्ट मिलता है. मोस्टली जूनियर्स को ये टेस्ट नहीं दिया जाता, या मिड लेवल को भी ये टेस्ट नहीं दिया जाता. लीड पोजीशन को इसलिए दिया जाता है बिकॉज एज यू कैन सी दिस सिस्टम आर्किटेक्चर हाईलाइट्स मल्टीपल different aspects of a product. And for a lead you should be able to understand all these type of products, and you should be able to create a test plan for the entire product, because that's the kind of skill set a lead QA engineer should have, or like a very very lead or a QA architect should have. तो या QA मैनेजर शुड हैव कि उनको पूरा एक ऑल इनकम्पसिंग होना चाहिए. इट डिपेंड्स कि कंपनी का साइज कितना है. कंपनी स्टार्टअप की होगी तो वो लीड किया होगा, अगर वो कंपनी बहुत बड़ी होगी तो वो QA मैनेजर या QA आर्किटेक्ट की तरफ चले जाएंगे. तो yeah, so they would give you a system architecture design, and they would give you a specific time frame, and they will ask you to create a complete test plan for this. और उसके बाद after you have created and submitted the test plan, you will have अगर उनको पसंद आता है and they are interested in you, you will have a discussion about that test plan with hiring managers, and they will go over a couple of aspects कि उनको जो interest लगता है कि आपने ये decision क्यों लिया, ये decision क्यों लिया. That would show you कि आपके decision making skills किस तरह की हैं.
And yeah, that would pretty much cover the entire technical test for a QA engineer. इस तरह का technical QA engineer का test होता है. And I didn't add automation to any of this because automation is a very new part of QA engineering. QA engineers have been there from the start of time. Automation is pretty new, and automation is, it sounds like a beast, it looks like a beast, but it's not. It's very simple, it's very basic. और इसलिए जो ऑटोमेशन इंजीनियर्स के टेक्निकल टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो हम पहले जितने भी सिनेरियोज के गो थ्रू हुए हैं, पैनल सेशंस के जितने भी क्वेश्चंस थे, और जो टेस्टिंग सिनेरियोज जो या टेस्ट जो था टेक्निकल टेस्ट उसके जो सिनेरियोज थे, ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए ये सारी चीज़ें वैलिड हैं, उनको ये सब पूछा जाएगा, लेकिन उनके साथ एडिशनली ऑटोमेशन की बातें भी पूछी जाएंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑटोमेशन इज अ टूल, and we as hiring managers would be more than happy to hire someone who doesn't have experience in automation in an automation engineer post if they are able to ace their technical test otherwise and they can prove that they are a very strong QA engineer candidate. So QA engineering is a skill set, is a full skill set, it's a mindset जो कि it encompasses multiple things. So अब सिर्फ just because automation आपको नहीं आती, it won't impact your chances that much. So I added this part for automation interview separately because ये just वो I wanted to highlight this one point and उसके बस थोड़े से add-ons हैं. So let's just go over them really quickly. For panel sessions एक automation engineer के लिए usually what we would ask के जो आपने अभी test plan बनाया है, जो हमने जो feature development का जो हम use के जो हमने workflow पूरा flowchart भी we went through. For automation engineer, the very next question would be how much of that are you going to are you or can you automate, और फिर बताएं why did you decide this and decide that, what was the thought process behind it, and then they would ask what kind of tools would you use to do that. But वो एक feature को लेके they'll just start asking questions regarding that and connecting that कि आप tools कौन से use करेंगे, what kind of, why would you choose your tools for automation, आप yeah, आप कौन से frameworks हैं जिससे आप familiar हैं, that's when you can just say कि maybe मुझे automation नहीं आती है, लेकिन मुझे idea है. As a good QA engineer, आपका automatically आपका mind चल रहा होगा कि ये चीज़ें मैं automate कर सकती हूँ, even if you have never worked on automation and even if you've never uh, written a single line of automation code, आपको पता होगा just by looking कि ये काम redundant है and I can automate it if I think about it. So if you can just show that kind of mindset in your interview, you will be a very good candidate for an automation engineer in Pakistan. मैंने यहाँ पे ड्राइवर्स का भी डाला है क्वेश्चन, व्हाट आर ड्राइवर्स, गिव एग्जांपल्स, बट वो ये कि इफ यू कैन गेट टू दैट पार्ट कि यू कैन शो कि मुझे मेरे पास टेक्निकल स्किल्स इतनी ज़्यादा है, तो देन यू वुड बी दे वुड आस्क कि अच्छा अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं, थोड़ा सा और डीप जाते हैं, लेट्स जस्ट आस्क अबाउट सिलेनियम, लेट्स जस्ट आस्क अबाउट ड्राइवर्स के आपको ये पता है, आपको ये पता है, तो वो उस तरह की बातें होती हैं. तो दैट्स द थिंग. टेक्निकल टेस्ट फॉर एन ऑटोमेशन इंजीनियर, प्रीवियस जो हमने 3 सिनेरियोज देखे हैं वो तीनों सिनेरियोज एप्लीकेबल होंगे, वो उन तीनों में से कोई एक आएगा. उसके साथ साथ हो सकता है एक एडेड सिनेरियो के ऑटोमेट सिंपल फीचर, basic simple feature like a login or something like that. But login की बहुत example लेते हैं because it's the most basic feature and it just shows a lot to us कि कैंडिडेट को उसका पता ही होगा, तो उसको मुझे एक लॉन्ग ब्रीफ नहीं देनी पड़ेगी, टेक्निकल ब्रीफ नहीं देनी पड़ेगी, एंड इट जस्ट उनको एकदम से क्लिक होगा एंड वी कैन जस्ट गेट टू द आंसर पार्ट. सो दैट्स व्हाई द लॉगिन feature is a very very common example जो कि यूज की जाती है इंटरव्यूज के अंदर. And that's pretty much it for the automation test. इससे ज़्यादा ऑटोमेशन इंजीनियर के टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता अनलेस कि वो कंपनी बहुत स्पेसिफिक हो और उनको बहुत ही ज़्यादा कोई प्लग इन प्ले सोल्यूशन चाहिए कि हमें एक क्यू इंजीनियर चाहिए जिसको हम हायर करें और वो day 2 से प्रोडक्शन रेडी हो जाए या day 1 से प्रोडक्शन रेडी हो जाए, और हमारा ये स्पेसिफिक स्टैक है, हमें इसी स्पेसिफिक का चाहिए, वी हैव जीरो ऑनबोर्डिंग टाइम. वो फिर मे बी टेक्निकल्स बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, बट generally speaking, these are the kind of questions they would ask for an automation test, for an automation engineer interview. Moving on, this is one point that I wanted to add as we're heading closer to our end time. I wanted to add this part, के common concerns of a candidate, क्योंकि as a QA engineer मैंने काफ़ी मेरी
जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, कैंडिडेट्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द इंटरव्यू पार्ट बिकॉज इट्स वेरी वेग किस तरह करना है. मेरे लिए भी बहुत वेग था कि क्यूए का टेस्ट लेते किस तरह है, देते किस तरह है, मुझे समझ नहीं आई थी बिफोर आई वेंट थ्रू द माई रिक्रूटमेंट ड्राइव्स टू क्रिएट माई टीम. मैं आई वेंट आउट एंड डिड रिसर्च एंड ट्राई टू फिगर आउट कि वो एग्जैक्टली आप लेंगे क्या, व्हाट आर वी लुकिंग एट. सो while doing this research, I came across these things कि candidates के concerns normally होते क्या हैं और why it is not a showstopper for or a showstopper for a hiring manager. क्योंकि hiring manager जो होगा वो normally एक QA engineer आपकी potential पे आपको hire करेगा. वो स्किल सेट पे बहुत रेयर होता है कि आपके स्पेसिफिक स्किल सेट पे आपको हायर किया जा रहा हो कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए. बहुत दफा जो होता है वो आपकी पोटेंशियल देखी जाती है. अगर आपका माइंडसेट इस तरह का है तो दे वुड बी very very happy to give you bandwidth and learning opportunities to grow within the team and within the company. I know it sounds really क्या कहते हैं, I know it sounds really fantastical कि ऐसा आपको कभी होगा, लेकिन more often than not companies would be more than happy to give you the time to learn and onboard if you can show your enthusiasm and if you can show your potential to grow and learn and you can already show कि आपका technical mindset है. So common concern is no experience in automation. अब इसका मैं जो मैं we have gone through this before, but I would like to stay here कि 5+ years of experience मेरा automation में अभी तक zero experience है. I don't know automation still. I was a lead before, a lead QA engineer. Right now, I'm in a much more technical position as an SDED. I work closely with features. I work closely on the engine. I work closely on the feature. Sorry, I said feature. But मेरे bugs होते हैं वो भी बहुत technical bugs होते हैं. So I'm in a much more technical capacity than what I was doing before, but still automation का मेरा बिल्कुल experience नहीं है. And every single time I went to an interview, I said कि मेरा automation में experience बिल्कुल भी नहीं है because I used to work in a VR field and VR field के अंदर automation is very very difficult. So the answer to this is कि hiring managers, if you can prove again we बात, if you can prove your enthusiasm, if you can prove your mindset, if you can prove कि you're a good QA engineer, आपका problem solving skills अच्छी हैं, analytics skills अच्छी हैं, technical skills अच्छी हैं, but आपको बस एक problem है क्या you never got around to learning Selenium, you never got around to learning any drivers or any script, any automation script, that would be okay. They would be like, अच्छा, we can invest in you. The company would be interested in investing in you. And then saying okay ठीक है, आप time लें, automation सीखें, and then we'll come back to you later. But automation सीखें, and while you're learning automation, do your the rest of the job, because the rest of the job automation is just like 25 to 30% of the job, unless you're even still, yeah, 25 to 30% of the job, unless you're very very specific into automation, then it's like 50-60, but कभी भी 100% नहीं होता. So that's why वो showstopper नहीं होता. Company stack is in Django, but I don't even know what that means. So yeah, that was a very common question जो कि होता है कि अब हम services में काम करते थे, bug verification के लिए करते थे. Now we're going into feature development, proper जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहे हैं, उनका पूरा टेक स्टैक है. मुझे टेक स्टैक उनका समझ भी नहीं आता कि उनका है क्या. Again, hiring managers hire you for your QA potential, your mindset, how strong you are technically. If you can prove that with the kind of skills that you currently have, like अगर मैं यहाँ पे अपने इंटरव्यू में कहती हूँ मुझे Django नहीं आता, लेकिन I'm very comfortable with Angular. Better example, मैं Unity की हूँ, गेमिंग क्यों, मेरा पूरा डेवलपमेंट का करियर जो है वो यूनिटी का स्पेसिफिक है. तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज वेब बेस्ड स्टैक्स. लेकिन अगर मैं वेब बेस्ड स्टैक के कंपनी में जब मैंने इंटरव्यू दिया, आई टोल्ड देम लाइक आई एम नॉट देयर. सो देयर हायरिंग मैनेजर, they started asking me questions like overall general questions, and I showed them okay, I know the RESTful APIs, I know what they look like, I know कि उनका basic architecture करता है, I know MVC, I know web development. So they were more comfortable with that. Okay, that shows कि वो एक candidate हमारे पास आया जिसका original tech stack बिल्कुल different है हमसे, but they took the time and effort to learn about a tech stack जो कि उनको काम भी नहीं आना. That just shows enthusiasm, and they would be very much interested in that. So yeah, as long as you can prove it by your skills, uh, it will not be a showstopper, and you will still be in the running. No experience in services or vice versa, that's completely okay. Like I said, onboarding time हर company के पास होता है, unless वो completely company के पास अगले
दोनों क्वेश्चंस का, नो एक्सपीरियंस इन स्टार्टअप्स और इन स्मॉल टीम्स और बिग कॉर्पोरेशन डिटेल, इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, अनलेस उस कंपनी के पास ऑनबोर्डिंग का टाइम बिल्कुल 0% है और वो इंतहाई शॉर्ट है ऑन बजट, एंड दे रियली वांट समवन फॉर द नेक्स्ट 6 months टू कम ऑन बोर्ड एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग वर्क from day one, they be production ready. Everyone will have an onboarding time period, and they will be ready to invest in you, and they will be ready to teach you and assimilate you in their working environment with their team. Every hiring manager जब वो hire करने जाते हैं, they understand कि वो एक गैर बंदे को अपनी टीम में लेकर आ रहे हैं, and it's going to take a while for them to be comfortable, for the team to be comfortable around them, for them to be comfortable with the team. It will take a while for them to understand कि product क्या है और product का backend क्या है, सब कुछ run कैसा कर सकता है. So onboarding time varies from company to company, but there's always an onboarding time. So yeah, don't worry about it. Just because इस तरह की चीजें आपके माइंड में आ रही हैं, इससे आप hesitate नहीं हो for applying for a job. If you think कि ये job exciting है आपके लिए and you want to do it, go for it. Don't worry about it. I made the very scary. I was ready to make a very scary sketch from game development to app-based development and web development, and वो बिल्कुल टेक स्टैक डिफरेंट था मेरे लिए, और एंड आई वाज रेडी टू डू दैट, एंड इवन स्टिल, इवन दो आई से कि मैंने यूनिटी में काम किया, अब मैं यूनिटी के बैकएंड पे काम कर रही हूँ, completely different story है, because पहले C sharp and scripting languages थी, और अब now it's backend, it's more graphics heavy, hardware heavy, much closer to hardware. अब मैं engine के backend काम कर रही हूँ, so अब completely different story हो चुकी है. So yeah, it is scary, but if it excites you and you can prove it to your hiring manager that it excites you and you have the potential to take on that challenge, they would be very interested in taking that challenge with you. So yeah, at the very end, I wanted to share this typical QA engineer job description. Okay, while I was doing my hiring drive, I came across this another issue कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्यूए की होती किस तरह की है, स्पेशली पाकिस्तानी टेक कल्चर में, क्योंकि पाकिस्तानी टेक जो कम्युनिटी है वो इस वक्त बडिंग है. सो I'd say it's in mid level now. जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो इंटरमीडिएट, वो बिगिनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ गई थी. तो जनरली जितनी कंपनीज थी उनको जो, अनलेस देयर वेरी बिग कंपनीज लाइक एफिनिटी और कॉन्टोर, जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं या फिर उनका प्रोसेसेस बिल्कुल सेट हैं, जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनको एज सच क्लैरिटी नहीं होती, दैट जस्ट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन दैट. सो जब टीम एक्सपेंशन की बात आती है, सो अ लॉट ऑफ पीपल aren't very clear के करना क्या है. So this is the kind of QA engineering job description I wanted to share with everyone today. And you can see different kind of skill sets. Okay, यहाँ पे list down किया that this job description is not for a junior level, it's for a mid level job description. So you can see a different type of technical tools यहाँ पे specify किए हुए हैं, but इसके अंदर testing techniques के बारे में focus बहुत है. Identify quality assurance process bottleneck and suggest actions for improvement. Investigate product quality in order to make improvements to achieve better customer satisfaction. So you can see कि requirement analysis जो है ना, requirement gathering बड़ा important है. But yeah, I guess yeah, that would be it. And yeah, if there are any Q&As, I don't think there are any Q&As today. Let me just check one more time on Facebook. Okay. Yeah, there aren't any specific Q&As, but I would, in the end, it's very close to start. We have like a couple of minutes. I'll just take the time to maybe go over a couple of things that have bothered me personally while I was going through the recruitment drive, while I was searching for a job and stuff like that. As a QA engineer, a lot of people get flustered, and they don't have a they worry about changing. क्या अच्छा, अब मैं बड़ी छोटी कंपनी से मैं बड़ी कंपनी में जा रहा हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ी कंपनी से छोटी सी कंपनी में 6 लोगों की कंपनी में जा रहा हूँ. Should I do that or should I not? Will I be able to adjust? And I can tell you that
programmers have the same kind of thought process, but is as के programmers उनको in the history काफी highlight मिल चुकी है. They're always in the limelight for in the software industry, so they have more confidence than a QA engineer to switch and take risks. But as a QA engineer, you should have the similar kind of thought process. Okay, जो भी है जैसा भी है, it's a challenge. At the end of the day, your focus should be problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप कोई भी चैलेंज लेते हैं ना, यू विल बी एबल टू सक्सीड इन इट. इफ इट्स मूविंग टू अ स्मॉलर स्टार्टअप जिसके सिर्फ 6 लोग हैं या 3 लोग हैं, या फिर इट्स अ मच बिगर कंपनी जिसके अंदर कॉर्पोरेशंस हैं, वर्क फ्लोज हैं, वर्क पाइपलाइंस हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी अ स्मॉल कॉग इन अ वेरी बिग मशीन. You will be able to accommodate, and you will be able to update yourself and get assimilated very easily. कॉन्फिडेंस लेवल के बड़े आई नो थोड़े से मसले होते हैं क्यों इंजीनियर्स का. मैं जितने भी लोगों से मैं बात की है, जस्ट दे डोंट नो व्हाट दे डूइंग, दे डोंट नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ पाथ. अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इज के कॉमन क्यूए का पाथ क्या होता है, करियर स्पैन क्या होता है. क्योंकि नॉर्मल क्यूए है, अच्छा क्यूए इंजीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर बन जाएगा, या फिर लीड क्यूए इंजीनियर बन जाएगा, क्यूए मैनेजर बन जाएगा. अब क्या करना क्या एग्जैक्टली, मेरा 10-15 साल का गेम प्लान क्या है. सो ये पढ़ाई की बात है, पढ़ाई करें, जाके रिसर्च करें. देयर आर अ लॉट ऑफ paths. You can make a career out of QA engineer in like a 15 to 20 or longer career in QA. It really depends on you how much of a proactive person you are, and how much of like a carpe diem kind of thought process you have that sees the day. So yeah, that will be it from my part. I will share the slide deck on the Slack channel for Get Hired, and if anyone wants to go through the SQA part, you are more than welcome to do so. And yeah, Mikal, thank you so much for saying that. Thank you. But yeah, that would be it for me today. I'm going to end this broadcast, and I hope this was hopeful for everyone. I hope this was helpful for everyone, and I hope everyone who watches this as a Q engineer, you make great strides in your work, in your career. If you have any questions about QA, you can search me online on LinkedIn. I have worked with PWIC very actively. So you can reach me through PWIC. You can reach me on LinkedIn, and you can just ask me questions, and I am more than happy and more than willing to answer any questions about your career, about SQA, and how can you progress. So yeah, I hope to see some of you down the line doing great things about SQA. Allah Hafiz from my side. Thank you so much. Do enjoy Get Hired. Do register for Get Hired. There are a couple of great companies there, and there are mock slots open. Oh, I am doing mock interviews. I forgot to mention that. I am doing mock interviews right now. So yeah, I think 2 slots open. If anyone wants to pick them up, go ahead. Yeah, that will be it. Allah Hafiz.